Hello everyone, I hope you all are doing well. So in this video we will cover multiple points. Multiple points किसे कहते हैं? A point through which more than one branch of a curve pass is called multiple points. Multiple points on the curve. Okay. So इसे ग्राफ की मदद से समझते हैं. इस ग्राफ में आप देखिएगा ये यहाँ से ओरिजिन से एक ब्रांच पास हो रहा है. ठीक है, एक ब्रांच पास हो रहा है इसीलिए हम इसे सिंगल पॉइंट कह रहे हैं. ठीक है, आप सेकेंड ग्राफ देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हो कि ये जो पॉइंट है उससे मेरा एक इधर ब्रांच पास हो रहा है, एक इधर इस तरफ ब्रांच पास हो रहा है. तो एक पॉइंट से जब दो ब्रांचेस पास हो उसे हम डबल पॉइंट कहते हैं. ठीक है, सेम ट्रिपल पॉइंट, जब एक पॉइंट से मेरा एक बार ब्रांच पास हुआ, दो ब्रांच, तीन ब्रांच पास हुए तो उसे हम ट्रिपल पॉइंट कह रहे हैं. उसी तरह जब मल्टीपल पॉइंट्स, आप यहाँ देख सकते हो, जब एक पॉइंट से बहुत सारे ब्रांचेस पास हो, उसे जैसे इसमें 4 ब्रांचेस पास हो रहे तो हम 4 पॉइंट कह रहे हैं. ये क्या है? मल्टीपल पॉइंट्स भी है. तो मल्टीपल पॉइंट इसे ही कहते हैं जब एक पॉइंट से मोर देन वन ब्रांच पास हो. जैसे कि डबल पॉइंट है, ये मेरा मल्टीपल पॉइंट है, ये भी मेरा मल्टीपल पॉइंट है, ये भी मेरा मल्टीपल पॉइंट है. ठीक है, और मल्टीपल पॉइंट्स को ही हम क्या कहते हैं? सिंगुलर पॉइंट्स. ठीक है, याद रखिएगा, मल्टीपल पॉइंट्स को ही हम कहते हैं सिंगुलर पॉइंट्स, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट से देयर आर मेनी ब्रांचेस पासिंग थ्रू दिस सिंगल पॉइंट. ओके, तो बेसिकली हम आगे बढ़ेंगे, डबल पॉइंट को देखेंगे. डबल पॉइंट में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ डबल पॉइंट्स, कितने टाइप्स के डबल पॉइंट है. पहला चीज़ है नोड. नोड, कस्प, आइसोलेटेड और कॉन्जुगेट पॉइंट. तो आइए देखते हैं ये सब क्या है. नोड डबल पॉइंट में तब ऑकर करता है द डबल पॉइंट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट टैंजेंट. जब डबल पॉइंट में, जैसे इस डबल पॉइंट में रियल और डिस्टिंक्ट टैंजेंट आए. डिस्टिंक्ट टैंजेंट मतलब दो अलग अलग डिफरेंट टैंजेंट आए. तो जैसे कि आप इस एग्जांपल में, इस ग्राफ में आप देखिए, यहाँ पर ये मेरा डबल पॉइंट है, ये इस कर्व के लिए मेरा ये टैंजेंट है, ये y इक्वल टू एक्स टैंजेंट है, और इस कर्व के लिए, इस ब्रांच के लिए मेरा ये वाला टैंजेंट है, दिस इज y इक्वल टू माइनस एक्स. ठीक है, तो द टैंजेंट्स आर रियल बट डिफरेंट. So this type of double point is known as node, in which we have different tangent but real, and in this tangent should not get coincide. ठीक है, इसमें tangent क्या है ना, coincide नहीं कर रहा है ये दो, because they are intersecting, they are not coinciding. इसे हम कस्प से समझेंगे, क्योंकि कस्प पे क्या करता है ना, coincide करता है. अब देखिए, कस्प का कंडीशन है कि द डबल पॉइंट्स आर रियल एंड सेम टैंजेंट. तो इसमें से रियल होना चाहिए एंड टैंजेंट शुड बी सेम. तो दोनों का एक ही टैंजेंट है, एक्स एक्सिस इज द टैंजेंट. ठीक है, एंड both the branches are coinciding this. Okay, both the branches are coinciding this, so this is known as cusp. Okay, isolated point or conjugate point किसे कहते हैं? The tangents, when the tangents are not real. Not real in the sense when we get an imaginary tangent. Okay, means when our tangent's value is under root negative. In that case we get imaginary tangent. So in this we know, we call this type of point is conjugate point. Okay, now necessary conditions for the existence of a double point. What are the necessary conditions? तो सबसे पहले we will given a function or polynomial of x and y. सबसे पहले we have to find out the partial derivative of this. Okay, with respect to x and then with respect to y, and after finding the partial derivative of both this, we have to find the value of x and y by equating both these values. Okay, as we have done in the previous video, हमने कैसे मैक्सिमा मिनिमा में पार्शियल डेरिवेटिव सीखा था, वही इसमें भी वही लगाना है, उसी का यूज़ होगा.
तो ये तब समझेंगे व्हेन वी विल टेक अप अ क्वेश्चन. ओके, सो हाउ टू फाइंड द नेचर ऑफ अ डबल पॉइंट. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड दिस and these values. Okay, so this is delta square f by delta x delta y. This is del square f by del x square and this is del square f by del y square. कैसे फाइंड आउट करना है ये पार्शियल डेरिवेटिव मैक्सिमम मिनिमा इससे पहले जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें मैंने बताया हुआ है. सो इफ दिस कंडीशन हैपन व्हेन दिस इज लेस देन द मल्टीपल ऑफ दिस, then our point is conjugate point. Okay, but if the both of these values get equal, okay, so in that case we will get a cusp, and if the value of this is greater than these, then that case node occurs. Okay, now we will see a question. What is the question here is find the double point ऑन दी कर्व एंड देयर नेचर. ठीक है, तो आपको ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहेगा. तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर इसे हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, सो ये हमें क्वेश्चन गिवन है. सबसे पहले हमें क्या निकालना है, पहले तो इसे हम सिंप्लीफाई फॉर्म में करते हैं. तो ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा. नाउ वी हैव टू फाइंड डेल एफ बाई डेल एक्स. ठीक है, ये पार्शियल डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2xy. ओके, नेक्स्ट स्टेप हमें इसको इक्वेट करना है इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y. सो 3x स्क्वायर माइनस 2xy is equal to 0. We will take x as a common here and we will left with 3x minus 2y equals 0. So from this we get x equals 0 and 3x equal to 2y. Okay, now let this be equation number 1. Okay, now we have to find del f upon del y. This means differentiating with respect to y. Which equation? In this equation. Okay, so we get from this minus x square plus 2y equals 0. So this is what we can do here is substitute the value of 2y. In the above equation we get 2y equal to 3x. So we are substituting this here. So minus x square plus 3x equals 2. We will take x as a common and we will left with 3 minus x equal to 0. So from this we get x equal to 0 and x equal to 3. Now we get two values of x. Now we will going to put one by one the value of x in this equation in order to get two values of y. Okay, so first when x equal to 0, putting in this equation we get 3 into 0 equal to 2y, which is y is also 0. So when x is 0, y is also 0. Now when x equal to 3, y is equal to 3 into 3 upon 2, which is 9 by 2. Okay, so now we will check. What we will going to check? Whether the value of x and y are satisfying this equation or not. If LHS and RHS of this equation get satisfied, then we will conclude that yes, it is a double point. So first we will check for this f x comma y is equal to 0. So here x is equal to 0, y equal to 0. Putting in this equation, write the equation first, x cube minus x square y plus y square. Here put x equal to 0 and y is also 0. So you can also shift this y square in the right side. So it will become like this. So here we can say 0 is equal to 0. So both side of this equation is getting satisfied here. Means LHS is equal to RHS. So we can say that, what we can say here, that this is a double
point. Okay, now we will check for this x equal to 3 and y equal to 9/2. So putting the value of these x and y in this equation, x cube minus x square y is equal to y square. X cube is 9, x cube is 3 cube and minus x square. So making it simplify, take x square as a common, x and minus y equal to y square. So here 3 minus 9/2 equal to 81/4. So now 9, 3 to just 6 and minus 9, that this is minus 3/2, right? 81/4. One more thing, when you will shift this in right side, you will get an extra minus here. So we will get a minus sign over here. Now we will get, after simplifying this LHS and RHS, we will get minus 27/2 is equal to 81/4. So here we can see that LHS is not equal to RHS. Okay, this means this is not satisfying. So this is not a double point. We are only getting one double point when x equal to 0 and y equal to 0. Now what is the next step? To find the nature of the double point. And for that we need to find del square f upon del x square. Okay, means double differentiating this. What we will get here? 6x minus 2y. Okay, now find out del square f del y square is equal to, differentiating this with respect to y again, we will get 2. Okay, now del square f by del x del y. अब इसमें क्या करना है ना, किसी भी एक को लेकर y के रिस्पेक्ट पे या इसको लेकर x के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करना है. तो वो किस तरह होगा, इसी को लेकर करते हैं हम. तो वो हमारा आ जाएगा minus 2x. ओके, इसमें हमने क्या किया, y को विद रेस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट किया, तो माइनस का 2x आ गया यहाँ पर. सो नाउ हमारे पास ये तीनों वैल्यू है. अब हम चेक करेंगे हमारा जो पॉइंट, जो डबल पॉइंट है x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 पे नेचर क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ इस साइड में हम ऐसे लिख रहे हैं, del square f del x square, when 0 0 I will get 6 into 0 minus 2 into 0 which is 0, del square f upon del x square 0, 0. इसमें तो कांस्टेंट कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये वैसे भी क्या, ये 2 होगा. ठीक है, और ये जब मैं इसमें पुट करूँगी del square f upon del x del y 0, 0, it is again 2 into 0 0. So here we are getting these values. Now let's see the conditions. So here we have to check for this. Okay, so let's put the value in this equation. We have to write so this is what, this is 0 and the multiplication of these two, which one, del square f upon del x square and del square f by del y square. So this is 0, this is 2, 0 into 2 is 0. Okay, so here we can see that this is also 0, this is also 0. So when both the sides are equal, we get cusp. Okay, so when आपको नेचर निकालने देगा, तो इन दिस केस जब दोनों इक्वल होगा तो ये कस्प होगा. तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है. तो यू हैव टू राइट लाइक दिस कि hence double point is a cusp. Okay, means real and equal
tangents. So likewise, you have to solve other questions. Okay, take a screenshot or make a note. I hope this video is helpful for you. Thank you.